हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पेपर गेट 2023 का। यहाँ पर में है क्वेश्चन नंबर 9। इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ था? अगर 3 to the power 999 एवरी नंबर फॉलोज द साइकिल ऑफ 4, so 3 to the power 999 into 7 to the power 1000, so ये होगा 6 to the power 999 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर होगा 3, और 7 to the power 1000 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर होता है 0। तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि हर नंबर 4 का साइकिल फॉलो करता है। So 3 cube is 27, 7 to the power 4 is 240. I must end up with 1, 7 into 1, 7. So last digit is 7. Answer is. Let's go for 11 now. मैं diagram वाला questions बाद में करूँगा. Which word below describes the idea of both spineless and cowardly? Okay, so याद कैसे रखेंगे हम लोग? डरपोक लोगों को क्या बोलते हैं? डोंट बी अ पुसी, बी अ टफ गाय, ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पर भी वही है। सो डोंट बी अ पुसी, सो पुसिलेनियस इज द वर्ड एंड दैट्स द आंसर। ओके, 12 is right proposition to fill in the blank. The whole family got together at Diwali. Okay. Next 13, select the options to fill in the blanks in the passage. So the dash factor amid the turbulence has been the disheartening. पहले इसको first read it. Dash high octane action oriented films such as RRR, KGF chapter, काफी नया बात है भाई। KGF और RRR के बारे में क्वेश्चन आ रहा है आजकल। अच्छा है, हम लोग के वक्त तो सिर्फ मदर इंडिया के ऊपर ही जाता था। पुष्पा from the film industries in the south of the country. Traditionally, films made in the south have done well on their own, but increasingly their dubbed versions has performed well in the Hindi heartland with collections of those of the Bollywood counterparts. So पहला है the redeeming factor होगा, कितने पैसा उठा रहा है, so the redeeming ये हो गया of the turbulence has been outperformance of तो दिस ये फिर हो जाएगा जियोग्राफीज और जियोग्राफीज बट इंक्रीजिंगली विथ कलेक्शंस इक्लिप्सिंग। इक्लिप्स मतलब ये सोलर इक्लिप्स जैसे होता है, एक के ऊपर एक आ जाता है, सो इक्लिप्सिंग दोज ऑफ दिस। तो काफी अच्छा इंग्लिश के ऊपर ये दिया गया है, इट्स गुड।